Hello everyone, I DKBALHARA welcome you all in this series of videos. As you all know friends, in last lectures we have discussed two of the methods to solve a quadratic equation, to find the roots of quadratic equation. One was factorization method and the second was completing the square. जी हाँ दोस्तों, पिछले लेक्चर्स में हम दो मेथड डिस्कस कर चुके हैं. पहला था फैक्टराइजेशन मेथड एंड द सेकंड वन वाज कंप्लीटिंग द स्क्वायर. आज के इस लेक्चर में थर्ड को डिस्कस करेंगे एंड द थर्ड मेथड इज quadratic formula. If we talk about quadratic formula, then quadratic formula was derived by an Indian mathematician named Sridharacharya. जी हाँ, Sridharacharya and Indian mathematician who derived quadratic formula. पहले हम quadratic formula को generally discuss करेंगे and after discussing generally we will apply the formula on particular quadratic equation. As we know, the general form of quadratic equation is ax square plus bx plus c equal to 0. This is the quadratic general form of quadratic equation, and a, b, c, these are the real numbers. And the quadratic formula that was derived by Sridharacharya is variable, and here in this equation variable is x, so x is equal to minus b plus minus under the root b square minus 4ac upon 2a. Friend, pay attention. We can see a is the coefficient of second degree term, means the a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x, and c is the constant term. Now on any particular equation we can apply this identity by comparing the given equation with this general form. We will get the values of a, b and c. After substituting the values of a, b and c in this formula, we will get the value of x. Let us consider a quadratic equation. We will take the same quadratic equation as we have discussed in previous lectures, and that was 2x square minus 5x plus 3. Okay friends, याद है, ये वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और उससे पहले फैक्टराइजेशन में भी हम इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर चुके हैं, और जो रिजल्ट थे द रूट्स वर 1 and 3/2. यहाँ भी रूट्स वही आएंगे 1 और 3/2, लेकिन मेथड को अप्लाई कर लेते हैं. नाउ बाय कंपेयरिंग द गिवन पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नाउ value of a will be, therefore a will be equal to 2. Why a is 2? Because a is the coefficient of x square, a is the coefficient of x square in general form, and 2 is the coefficient of x square in particular quadratic equation. Similarly, the value of b is minus 5 and the value of c is 3. Now we have to substitute values of a, b and c in the quadratic formula. Now by substituting the values of a, b and c, our variable x will be equal to, minus sign is already there, we have to substitute the value of minus b, and that is minus 5, plus minus under the root minus 5 whole square minus 4, a is 2 and c is 3. Now and in denominator it will be 2a, a is 2. Now we have to simplify it. X equal to minus minus, it will be plus plus minus. Now by solving minus 5, square of minus 5, it will be 25. 25 minus 4 2 ja 8, 8 3 ja 24 upon, and in denominator it will be 4. Now x equal to 5 plus minus 25 minus 24, it will be 1 under the root 1 upon 4. Now further simplifying, we will break it. X equal to 5 plus 1 upon 4, and one time it will be x equal to 5 minus 1 by 4. Getting now? Now from here x equal to 5 plus 1, 6 by 4, and from here x equal to 5 minus 1, 4, 4 upon 4. Now x equal to, simplifying this, 3 upon 2, and here x equal to 1. Okay friends, look here,
x equal to 1 and 3 by 2. These both are same roots as we have find in previous lecture. Okay friends, in previous lecture we have discussed this क्वेश्चन विद डिफरेंट मेथड. पहले हमने इसी क्वेश्चन को इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड किए फैक्टराइजेशन से, उसके बाद हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से फाइंड किए, और अब हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से फाइंड किए. मेथड कैन बी एनी बट रूट्स और वी कैन से द सॉल्यूशन दैट विल ऑलवेज बी सेम. तो ये थे हमारा आज का टॉपिक फ्रेंड्स. उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मेथड समझ आया होगा. वन मोर थिंग फ्रेंड्स, look here, b square minus 4ac, b square minus 4ac, this is called the discriminant, and this help us to determine the nature of roots. जो roots हमें मिले हैं उनके nature को determine करने के लिए ये काफ़ी helpful है, लेकिन ये बात हम next lecture में discuss करेंगे. तब तक के लिए आप हमारी पहले वाली वीडियोस देख सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप उन्हें शेयर कीजिए. अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे. थैंक यू वेरी मच.